एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः कोप 28 नामधेय जलवायु परिवर्तन सम्बद्धस्य संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धे 28 सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधाय स्व संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य दुबई स्थानाय प्रस्थीयमानो वर्तते। कोप 28 सम्मेलनम् असैव मार्गशीर्ष मासस्य 14 दिवसात् 26 दिवसं यावत् दुबई स्थाने आयोक्ष्यमाणं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डस्य एतन्मासस्य 15-16 दिवसयोः आयोक्ष्यमाणे कोप 28 विश्व जलवायु कार्यशिखर सम्मेलनस्य उच्चस्तरीय सत्रे सहभागिताया कार्यक्रम स्थिति परराष्ट्र मन्त्रालयो ज्ञापयति। असौ एतन्मासस्य 16 दिवसे उच्चस्तरीय सत्रं सम्बोधयिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डस्य संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य 52 संघीय दिवस समारोहे जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अवार्ड नामकै पुरस्कार सम्मान सम्बद्ध समारोहे च सहभागिताया कार्यक्रम वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डेन एतन्मासस्य 16 दिवसे जलवायु परिवर्तनं विषयीकृत्य नेपालस्य दृष्टिकोणं प्रस्तुत्य कोप वार्ता प्रक्रियां पर्वतीय कार्यसूच्या प्रवर्धनाय हिमालयस्य आह्वानं जलवायु संकटात् अस्मान् कः रक्षति इति शीर्षकीय उच्चस्तरीय विचारणा कार्यक्रम आयोक्ष्यते। प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डस्य उच्चस्तरीय सत्रस्य अवसरे सम्मेलने सहभागिभिः विभिन्नानां राष्ट्राणां राष्ट्रप्रमुख सर्वकार प्रमुखैः अन्याभिः उच्चपदस्थाभिः व्यक्तिभिश्च सह द्विपक्षीय मेलवार्ता तालिका स्थिति परराष्ट्र मन्त्रालय सूचयति। असौ अबुधाबी स्थितस्य नेपाली राजदूतावासस्य भ्रमणं विधाय नेपाली समुदायेन सह अन्तर्क्रियां नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स व्यापार शिखर सम्मेलने सम्बोधनं च विधास्यति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमणं प्रपूर्य एतन्मासस्य 17 दिवसे स्वदेशं प्रत्यागन्ता। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निगदति सामाजिक सुरक्षा कोषस्य प्रभावकारिताय अभिवृद्धये गभीरेण प्रवर्तितव्यम्। षष्ठ सामाजिक सुरक्षा दिवसस्य अवसरे गतदिने काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः समाजवादोन्मुखस्य राज्यस्य परिकल्पनां सफलयितुम् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनार्थम् आत्मना गभीरेण प्रवर्त्यते इत्यभाषत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अधुनावधि 5 लक्षाणि श्रमिका सामाजिक सुरक्षा कोषे आबद्धा सन्तीति सूचयन् विदेशस्थितान् अनौपचारिक क्षेत्रस्य च अशेष श्रमिकान् वृत्तिदातॄन् च तत्र आबद्धतायै अनुरुणत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वशैव निर्देशनेन अग्रेसरतया च वैदेशिक वृत्त्युपार्जनाय गतानां श्रमिकाणां सामाजिक सुरक्षा प्रारब्धेति संस्मरन् सारल्येन सहजतया च सौविध्यानं प्रदानार्थं कोषस्य व्यवस्थापकीय पक्षं सुदृढीकर्तुं निरदिशत्। भिन्न प्रसंगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वर्तमान व्यवस्थां दुर्बलीकर्तुं चलखेल जायमान स्थिति भासमानः इतिहासस्य अग्रगमनं प्रति प्रस्थानस्य हेतु परिवर्तनस्य वाहकानां राजनीतिक दलानां नागरिक समाजस्य बुद्धिजीविनां नैजस्य सार्वजनिकस्य च क्षेत्रस्य च व्यक्तीनां विद्यमानतां यावत् इतिहास न प्रत्यावर्तते इति प्रत्यपादयत्। नेकपा माओवादी केन्द्रेण दलस्य वेबसाइट सूचना सञ्जाल सार्वजनिकृतो वर्तते। पेरिस डाँडा वर्तिनी केन्द्रीय कार्यालय दलस्य अध्यक्ष प्रधानमन्त्री च पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो दलस्य वेबसाइट सूचना सञ्जालं शुभारभत। तदवसरे दलाध्यक्ष प्रधानमन्त्री च प्रचण्डः सूचना प्रविधि वर्धमानेन प्रयोगेण सहैव दलस्य सूचना जनतां यावत् प्रापयितुं दलस्य वेबसाइट सूचना सञ्जाल निर्मितो स्थिति उदयरयत्। अध्यक्ष प्रचण्ड अभाषत सामाजिक सञ्जाले विचारवतां विहित त्याग योगदानानां च दलानां नेतॄणां च विषय चिराय कुप्रचार विधीयमानो वर्तते। अध्यक्ष प्रचण्ड मिथ्या सूचना कुप्रचारं च प्रतिकृत्य सूचना प्रविधि प्रयोगात् दलस्य गतिविधिन् सार्वजनिकर्तुं वेबसाइट सञ्जाल सञ्चालितो स्थिति समस्पष्टयत्। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा निगदति गणतन्त्रस्य विकल्प नास्ति। ह्यः भरतपुर विमानस्थले पत्रकारैः सभापति देउवा अवोचत् गणतन्त्रस्य विरोधिनां जनानां सार्थक्यं न वर्तते। तदवसरे नेपाली कांग्रेस दलस्य नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला राजतन्त्रस्य प्रत्यावर्तनस्य विषये आत्मनि विश्वासो नास्तीति प्रतिक्रियां प्रादात्। असौ सर्वकारस्य कार्येणी प्रति नागरिकाणां पूर्णतः सन्तुष्टि अभावेन व्यवस्थामेव प्रश्न उद्भूतो स्थिति अतर्कयत्। नेता डाक्टर कोइराला नारायणगढ़ बुटबल मार्ग खण्डस्य विषय आत्मना निर्माण व्यवसायिन भूयो भूयो प्रोच्यमाना सन्तोपि कार्यं न सम्भूतम् इत्यतः विषयं संसदि उत्थापयिष्यति इति असूचयत्।
एवं नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जनपरिषद दलदल स्थानीय नेपाली कांग्रेस दलस्य नवलपुर जनपदस्य प्रथमां जनपद मेलाम सम्बोधन सभापति देवबा अगदत संविधान सभाया राज्ञ अपसारण निर्णयो विहित इत्यत राजतन्त्रम न प्रत्यावर्तते सभापति देवबा अन्य विषयसु विमर्शनं सम्भवं सदपि राजतन्त्रस्य प्रत्यावर्तनस्य विषये कथं विधमपि चर्चनं न भवतीति भाषमाणः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रं संस्थागतं विधातुं सर्वैर्मिलित प्रवर्तनीय मित्र बलं प्रादात् कार्यक्रमे नेपाली कांग्रेस दलस्य महामन्त्री गगन थापा राजतन्त्रस्य पक्षपोषणं भविष्यति घातकं भवतीति अवोचत् सभामुख देवराज घिमिरे समितिनां कार्याणि प्रभावकारी रूपेण अग्रे वर्धयितुं सभापति निर्दिशति सभामुखस्य घिमिरे विधस्य समितिनां सभापतीनां च पूर्वविद्युत सिंहप्रासादे उपविष्टे उपविशे सभामुख घिमिरे समितिषु विद्यमानानि विधेयकानि कार्ययोजनां निर्माय अग्रे वर्धयितुं सभापतिन् एवं निर्दिशत् सभामुख घिमिरे आगामिनी पूर्व उपवेशे विधेयकानां सप्रतिवेदन प्रस्तुते दायित्व वहनत्वेन क्रियाशीला भवितुमपि सभापतिन् निर्दिष्टवान् राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य केन्द्र कार्य समिति संसदीय दलस्य च त्रिदिवसीय संयुक्त उपवेश ह्यो महोत्तरी जनपरिषद जलेश्वरे प्रारब्धः उपवेशे राजनीतिकं सांगठनिकं आर्थिकं अनुशासन सम्बद्धं च प्रतिवेदनानि प्रस्तुत्य सांसदान् संसदीय कार्याणयस्य समीक्षा दलस्य समग्र रणनीति महाधिवेशनस्य विषयेषु विमृश्यते इति दलस्य महामन्त्री प्रवक्ता च डाक्टर मुकुल ढकालः ज्ञापयति सर्वकारेण कोरोना विषाणु संक्रमणस्य प्रतिरोधी अतिरिक्तं टीकाकरणम् आनीतमस्ति स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयेन कोरोना विषाणु संक्रमणम् अविद्यमानं सदपि दीर्घरोगिणां विदेशं गन्तुकामानां जनानां च कृते टीकाकरणस्य आवश्यकत्वात् अतिरिक्तं टीकाकरणम् आनीतं वर्तते स्वास्थ्य सेवा विभागस्य आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाया प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसिया लक्षत्रयं 77,000 च फाइजर टीकाकरणस्य मात्रा आनीता सन्तीति ज्ञापयत् एतस्य अनुसारेण टीकाकरणस्य इमाः मात्रा अतिरिक्त टीकाकरणाधान स्वीकृते आनीताः वर्तन्ते सर्वकाराय गाभि नाम्न्या ग्लोबल एलायन्स संस्थया गर्भाशयस्य मुखस्य अर्बुदरोगस्य विरोधिनी HPV टीकाकरणानि प्रदास्यन्ते स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयेन गत श्रावणस्य अन्तिम सप्ताहे गाभि संस्थाः पुरतः टीकाकरणानि अभियाच प्रस्तुतं प्रस्तावं स्वीकृत्य अनया संस्थया इमानि टीकाकरणानि प्रदीयमानानि सन्ति मन्त्रालयस्य स्वास्थ्य सेवा विभागस्य परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालः गाभि संस्थया आत्मवि प्रेषितं प्रस्तावं स्वीकृत्य HPV नामानि टीकाकरणानि प्रदातुं प्रतिबद्धता ज्ञापितेति अगदत् अत्रान्तरे काभ्रेपलाञ्चोक जनपदस्य बनेपा वर्तनी पुरातने शिर मेमोरियल चिकित्सालय अर्बुदरोगस्य उपचार प्रारब्धो वर्तते एतस्य चिकित्सालयस्य अर्बुदोपचार संयोजक डाक्टर ध्रुव कणेल एवं अज्ञापयत् एशिया क्षेत्रस्य निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बद्धानां निकायानां संस्थानां च उच्चस्तरीय प्रतिनिधीनां सहभागितायाम् असैव मार्गशीर्ष मासस्य 21 च दिवसयो काष्ठमण्डपे 2 दिवसीयम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनं भविता सम्मेलने एशिया प्रशान्त क्षेत्रस्य 40 देशानां निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायानां प्रमुखाणां प्रतिनिधीनां नागरिक समाजस्य निर्वाचनस्य विविधायमेषु क्रियाशीलानां लाभराहित्य संस्थानां प्राज्ञिक संस्थानां च शतद्वयादपि अधिकानां प्रतिनिधीनां च सहभागिता भविष्यति सम्मेलनस्य मूल समाघोषः सबल लोकतन्त्रस्य निर्माणं निर्वाचनेन सम्बद्धानाम् अवसरस्य समवायानां च सम्बोधनम् इति निर्धारितो वर्तते भारतस्य गुजरात राज्ये वज्रपातस्य कारणेन 24 जना मृताः 23 जना आहताश्च सन्ति इति समाचारः।